पहले मैंने बोला था ना, जो आपका सपोज यू हैव दिस न्यूक्लियर ZA, so it is basically decaying to Y Z minus 2 A minus 4 plus helium, right? 2 4. So there will be emission of energy, right? Emission of energy. So whatever energy is releasing, that will be in the form of kinetic energy of this particle plus this particle. No, Okay, sir, got it. you can easily get this because you know that Q value. If you have doubt now, you can if you have more clarification, you just call me or chat me. I'll give that answer. Because Q value Okay, is sir. nothing but the mass difference or kinetic energy difference. So if you rearrange it, you will get that. That Q Okay, sir. will, that whatever energy is releasing, that will be in the form of kinetic energy of this group. Okay, now we'll continue. Next, that is Gigan and Natal law. That law came in 1911. So actually, it's a empirical formula. So they have performed large number of experiment, and what they notice, suppose you have this similar decay. There is alpha emission, parent nuclei atomic number is Z. So half life of that alpha decay is related to that atomic number and energy release in this process. So what is that law? That half life ln t half, that is some constant a plus b, a and b are constant, z divided by q alpha. So half life of alpha emission is related to atomic number of daughter parent nuclei divided by q alpha. Q alpha means energy of alpha particle, and that is almost equal to that energy release in this process. Okay, so in many times I will write q alpha equals to u alpha in rest of the discussion. So this relation is experimental Yes, result. yes, this is a empirical result. They have performed large number of experiments and they have noticed this. Okay, now there is important topic, that is Gamo's theory of alpha decay. Gamo's theory of alpha decay. Okay, so when that they measured the kinetic energy of alpha particle or emitted alpha particle, what they have noticed, that the kinetic energy of alpha particle by using magnetospectrometer, the energy value was like in between 4 to 9 mega electron volt. Okay, but when that alpha particle is escaping from that nucleus, is suffering that large amount of barrier. So if you see this graphical picture, minus V naught, this is your potential VR, okay, and this is your radius, this is your barrier height. So inside nucleus at r equals to r, that alpha particle, before emitting alpha particle, it is suffering this kind of barrier height, and this is noted by capital V. The barrier height, this height is around 28 mega electron volt. Is it okay now? Yes, sir. Okay, so you see the kinetic energy of this alpha particle is how much? Only 4 to 9 mega electron volt, and suffering that much of barrier potential, and that is a big puzzle for nuclear scientists. Then Gamos took that concept of quantum tunneling. Okay,
So what is R here? So before discussion, let me give that idea. So this is your 0 and this is R. So suppose again I'm writing that same decay process. सर फिर से ब्लर हो गया. बताना आप लोग, ठीक है? जब ठीक नहीं सर. ठीक है? नहीं नहीं सर. नहीं सर. अब नहीं. अभी ब्लर. ठीक है, मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ फिर. This is your barrier height, and that height is B. And this is your kinetic energy of alpha particle. That is Q alpha almost equals to E alpha. That is 429 MeV. And that barrier height B is how much? Around 20 mega electron volt. So the kinetic energy of alpha particle is smaller than the barrier height. Then how it can escape from this barrier? Because inside nucleus, it is suffering this much of barrier, and its kinetic energy is only this much. So according to classical mechanics, that particle or alpha particle can never escape this barrier, right? But they are getting alpha particle. So for nuclear scientists, it's a big puzzle for them. Okay, but before that, let me write that R. What is R actually? R is actually, suppose you have daughter nuclei and you have alpha particle. सर सर मींस न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल मतलब निकलने के लिए बैरियर फील कर रहा है. हाँ, और इतना उसका काइनेटिक एनर्जी है. इतना उसका काइनेटिक एनर्जी है, इतना बैरियर फील कर रहे हो. तो ठीक है? क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो निकल नहीं नहीं जा पा रहा, सकते. पर हाँ. हम लोग को मिल रहा है. हाँ. दिस इज व्हाट इट इज. Let me that write that R. What is R actually? R is the distance between the center of daughter nuclei and center of alpha particle just before the separation. So what will be the R actually? This is your R. So can you write this R? How much it will be? सर आर वाई प्लस आर अल्फा. So R will be, yes, R will be R naught AY की power 1/3 plus A alpha की power 1/3. Radius of this is nothing but R naught A की power AY की power 1/3 plus radius of alpha particle, that will be R naught A की power A alpha की power 1/3, right? So R is nothing but separation between the center of nuclei of daughter and alpha particle just before the point of separation, and 0 is representing the center of daughter nuclei. Okay, is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now, so it will be the form of barrier outside of R. So then how it will be? It will be like this, right? Yes, sir. So this is a Coulomb barrier, and that Coulomb barrier as a function of R, that will be how much? Z minus 2, that is the atomic number of daughter. Then you have atomic number of alpha particle E square by 4 pi epsilon naught R. Okay. So what will be that Coulomb barrier here? Coulomb barrier will be how much? Here, how much it will be? Captain, like separation between them. BCR will be how much? Z minus 2 E square by 4 pi epsilon naught. Then you have R, capital R, right?
and that is actually barrier height. Now, so according to classical mechanics, this particle can never escape. But Gamos took that concept of quantum tunneling. So what quantum tunneling is saying, suppose you have one particle, its energy is this much, and is suffering some barrier. Barrier height is V naught or V. So this particle is propagating along this axis. Its energy is less as compared to the barrier it is suffering. So here V is greater than E, and let us assume that width of this barrier is A. Then, according to quantum mechanics or quantum tunneling, this particle can tunnel through this barrier, and that what will be the, although that tunneling probability will be very less, but there is some finite probability that this particle can tunnel through this barrier. Okay, so that probability will be how much? Exponential minus 2k k. 2k. K, right? So there is, although this number will be small, but there is some finite probability. So the same concept they have taken and they have applied here. So this particle can be like a wave nature, right? So this particle, it will be like this. So it can tunnel through this barrier. It will be like this. Okay. Now, at this point, what we can write? At this point, what we can write? Can we write like, at this point, can we write VC? Suppose this point is V. So VCB will be how much? Z minus 2 square by 4 pi epsilon naught B, right? And that will be how much actually? That will be the energy of alpha particle, right? Or it will be almost similar to Q alpha. Did you get? Because this is your VCB, right? Okay. Actually, that point will be on same line. This point will be on same line. So this is your VCB, and this is exactly same as the kinetic energy or Q value of alpha particle. Okay, so this is VCB, and this is exactly equals to Q alpha. Is it clear? Is it clear? Yes, so from here you can calculate B. So B will be how much? Z minus 2 square by 4 pi 2 square by 4 pi epsilon naught into Q alpha, right? So see, why I am calculating B actually? Because we know R, we have calculated B. So we can calculate that barrier width. This is actually your barrier width. Is it clear? Yes. Yes, sir. In question, they will ask you what is the barrier width. I'll give you question also. Okay. And what will be that tunneling probability? Sir, Yes. जरा VCB is equal to B कैसे आया मतलब VCB देखो जो ये vertical यहाँ पे देखो ये जो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? Only this much, right? This is along y-axis your potential, right? And this is your Coulomb, actually Coulomb energy. This is, so this is your Coulomb barrier or Coulomb energy, height of this, and this is exactly same as the energy. Same. This is the energy of alpha particle or Q value. And at this point, at point B, the Coulomb barrier is exactly matching with the energy of alpha particle. You see, this is the point of Coulomb barrier, and it is same as the height of energy of alpha particle. So from this formula, I can calculate that Coulomb barrier, and it will be same as kinetic energy or Q value. So from here, you will get barrier, that value of B. Now barrier width will be how much? PW will be how much? Simply B minus R. So means इधर से हम लोग को B का वैल्यू मिला है. यहाँ पे कैलकुलेट ये कर रहा हूँ ना, देखो ये आपका एक्चुअली बैरियर, इतना बैरियर सफर कर रहा है. Yes, sir. So this will be your barrier width. Like earlier I have written A. A was your barrier width, but here a barrier width will be how much? B minus R. Okay.
Okay, sir. Shall I erase? Shall I erase? Yes, sir. Now, how will write that tunneling probability? Sir, first K2 निकालेंगे. हाँ, तो आप लिखिए इसको. P will be how much? Exponential minus 2K A. A I will write later. So K will be how much? Root over 2m by h cross square. Okay. D minus D. D minus D. H cross square. Then V. V will be how much? Coulomb barrier. Barrier. So it will be Z minus 2 square y 4 pi epsilon naught R. Okay. Then E, can we write E like Z minus 2 E square by 4 pi epsilon naught B? We can write, right? Because Q Yes. was nothing but the Coulomb barrier at point B. So that energy, this is actually energy of alpha particle. But this energy you can write in terms of this Coulomb barrier. So the second term will be At R. Z, Capital. Z minus 2 E square by 4 pi epsilon naught B. Because we observed at point B that Coulomb barrier was exactly matching with the energy of alpha particle. Is it clear to all? Yes, sir. So you can clearly see that K is a function of R. No, K is a function of R. So So how do you get? subtract क्यों किया sir इसमें से? Huh? Why you have subtracted it? So this because Yes. that formula K is how much? K used to write how much? Root over 2m by h cross square V minus E, right? Yes, sir. So E just I have written E or Q alpha. It is almost same. Oh, okay, So sir. Okay, sir. this we have written, right? This was exactly like this. So in place of E, I have just substituted here. Okay, So you sir. can clearly see that K is a function of R. So how do you can write from here? P will be how much? Then you will have exponential minus 2K 0 to R to B KR dr. So this is your width B minus R. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. किसी का कोई डाउट है इसमें? किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर एक प्रॉब्लम करते हैं. Sir, Yes. K of R equals to 2m by h cut square. That means 2 into t square by Sorry. K of R equals to square root of 2m by h cut square. Z minus inside bracket Z minus 2 e square by 4 pi epsilon naught R minus Z minus 2 e square by 4 pi epsilon naught B. This is your K. K is a function of R. Is it clear now? Yes, sir. Did you get why I am writing like this? Because we already calculated B. B is a function of R, and at point B, Coulomb barrier is exactly matching with that energy of alpha particle. Yes, sir. Okay, let me do one problem. Shall I erase? Shall I erase? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, suppose uranium फिर से ब्लर हो गया. फिर से ब्लर हो गया. थोड़ा सा tilt होने से. $90 to 38 decays to thorium 90 to 34.
plus alpha particle. Okay, R naught is given. R naught is 1.2 femtometer. Okay, Q alpha is given 4.27 MeV. Okay, then they have asked what is the R. R means the separation between daughter and alpha particle just before the separation. Okay, so distance between daughter nuclei and daughter nuclei and alpha particle at the point of separation, that is R, that you have to calculate. Also they ask to calculate the barrier width. It will be how much? Can you calculate it? Yes, sir. So R is simple. How will calculate? R will be how much? R naught is 1.2. Then this 234 to the power 1 by 3, right? Because AY, if you remember previous lecture discussion, so AY is how much? Mass of this, mass number of this, that is 234 to the power 1 by 3, then 4 to the power 1 by 3. Okay, so if you calculate it, you will get, I have calculated, it is 9.3 femtometer. So first job is done. Now I will calculate barrier width. So by Q alpha. Also we can mention also this thing we have discussed. Square by 4 pi epsilon naught कितना होता है? 1.44 MeV FM. Okay. So now we'll calculate. What will calculate? B. 9.3 femtometer आया था. 9.3 femtometer आ रहा है ना? Yes, yes. Then you will calculate B. Can you calculate B? Height? Yes, sir. Okay. तो R निकल के आ गया, Q अल्फा गिवन है, तो आप ये निकाल सकते हो. Q अल्फा इज हाउ मच बेसिकली? 4.27. Z minus 2 square by 4 pi epsilon naught B. Okay, so B you can calculate. So this is how much? 90. 2 E square by 4 pi epsilon naught. Then you will have Q is how much? That is 4.27, right? Okay, and E square by 4 pi epsilon naught is how much? 1.44 MeV FM. कितना आ रहा है ये? 60.7. 60.7. Good. 60.7 femtometer. So barrier width will be how much? 60. Sir, that is 2 or Z, sir? हाँ? Sir, ये Z minus 2 into Z है और 2 है sir? 2. Okay sir, okay. इसका एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल का Z minus 2 मतलब डॉटर का है और आपका 2 जो है अल्फा पार्टिकल का. ठीक है? Sir, So- value of R is what? Value of capital R, Yes, sir. that is 9.3. 9.3 femtometer. So barrier width will be how much? B minus R. That is 9.3 femtometer. So how much you'll get then? 51.4. Good. 51.4. 4 femtometer. Okay. Now what about that barrier height? If I ask you what about that barrier height, can you calculate? Yes, sir. At capital R, sir. Good. So barrier height will be how much? Can you calculate? So shall I erase this part? Shall I erase? Yes, sir. Yes sir. So barrier height B is nothing but Coulomb potential or Coulomb energy at capital R.
So it will be Z minus 2 E square by 4 pi epsilon naught capital R. So everything you know, that is 90, then you have 2, then you will have 1.44 MeV FM divided by R was how much? 9.3, right? Yes, sir. Femtometer. So can you, femtometer will be gone. So if you calculate it, you will get, 27.87. 87, good. So B is barrier height, no? B, yes, capital B is Capital. barrier height. Okay, sir. I have noted, given that notation, right, in previous discussion. This height, okay. This height is B. I have given that notation in previous discussion. So this is your barrier height. Now we'll discuss that gamma decay. What is the time now? Okay, we have time. Shall I erase? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So gamma decay is always used to happen after alpha or beta decay. Okay. It always used to happen after alpha or beta decay. Okay. So suppose there is the emission of alpha or beta beta particle. After that, nucleus basically found in excited state. So they used to come to the ground state with the help of gamma decay. Gamma particle has very large energy, so it has very short wavelength. And you know, this is a part of, this is also electromagnetic wave, right? It has short wavelength, means energy E equals to hc by lambda. So if lambda is small, obviously energy will be large, right? So E is large. Energy is large. Okay. Then it has very large penetration power. Okay. Now we'll discuss kinematics of gamma decay. तो इतना लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. So suppose your nucleus initially at level EI. Okay. So this nucleus is here. This is excited state, and this is your final state. This is ground state. Okay. So this nucleus will come to the ground state by the emission of electromagnetic wave, and the energy of this particle is very large. So that is found in gamma ray region, and its energy will be h nu. So when that nucleus is in excited state, it will come to the ground state by the emission of photon, and that photon has very large energy or very short wavelength, and this is basically your gamma particle. Now can you calculate, can you tell me what will be the Q value
What will be the Q value? Anyone? H2? Q value of this process. Sir, Yes. sir, here means ये emission हो रहा है तो इसकी वजह से ही very large wavelength मिल जा रहा है. Large wavelength नहीं, small wavelength. Sorry, तो small ये wavelength. फोटोन के बराबर ही होगी सर क्यू अल्फा भी, h म्यू के EF बराबर, minus See, EI. see. EF माइनस EI. No. You see, this is at rest. It will decay. Photon will have some momentum, right? Momentum should be conserved. So this, when that it will come to ground state, that nucleus will have some. If photon is going to this side, this nucleus will go to this side from momentum conservation, right? So Yes, sir. of course this nucleus will have some. Daughter nucleus will have some. What? Kinetic energy, right? So what you can write? So you know that Q is nothing but kinetic energy of product minus kinetic energy of reactant. काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट कितना है? एक तो आपका ई गामा है, और जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा डॉटर है ना. ऑल्सो मैं मेंशन दैट नोटेशन हियर द मास इज m star when it is in excited state. When it comes to ground state, its mass is md. Okay, so the kinetic energy of this particle is, let us assume this is your ed. Okay, daughter nuclei. So now can you calculate ed? So ed will be how much? pd square by twice md, right? Yes, sir. Now can you how will calculate that pd? And momentum conservation? Exactly. So momentum will be how much? So initially it is at rest. So on the before the emission it is 0, right? Before emission it is 0, and let us assume that daughter nuclei has momentum pd. Okay, pd, and that gamma photon has momentum p gamma. So you can write, if you take modulus, you can write pd equals to p gamma, right? And p gamma is nothing but h nu by c. Yes. Right? So if you substitute it here, you will get p gamma plus, सर माइनस साइन आएगा ना? नहीं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ना मैं, माइनस आएगा, फिर मैग्नीट्यूड लिया मैंने. ओके, फिर आपका ये कितना आ जाएगा बताओ? So you can write like e gamma by c, right? So what you can write? E gamma square divided by twice md c square, right? Did you get? Yes, Yes, sir. So Q value for this process will be E gamma plus E gamma square by 2 twice mass of daughter into C square. Okay. Also you can write Q value will be how much? So you can write that mass of this minus mass of this, right? So can we write like this? M star minus MD C square, Yes, sir. Yes, right? sir. Rest mass of because mass of reactant minus mass of product, rest mass of photon is 0. So you can write like this. Sir, हाँ, सर ये ER square upon 2MA square कैसा लिखा सर? ER नहीं है, E गामा है ये. सॉरी E हाँ गामा देखो, सर. ये तो ये ए स्टेप समझ में आया आपको? यस सर, ये स्टेप आ गया. हाँ, यहाँ से देखो पीडी इक्वल्स टू पी गामा. फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? एच न्यू बाई सी होता है. यस सर. पीडी के जगह पे मैं ये सब फिट कर सकता हूँ, एच न्यू बाई सी. जस्ट Yes, यही sir. किया. और एच न्यू क्या है आपका? ई गामा है. एच न्यू तो ई गामा है ना. यस सर, यस सर. हाँ, ठीक है, ठीक है. ओके. और फिर क्यू, तो क्यू वैल्यू इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ओके, नाउ आई एम गिविंग ऑन प्रॉब्लम. शैल आई erase? Yes, sir. सर वो m star minus md ना? हाँ, एम स्टार माइनस एम डी. इस स्टेट में इसका मास एम स्टार है और यहाँ पे एम डी है. ठीक है,
समझ में आया नहीं? यस सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्लास में? सर डी और अल्फा में कंफ्यूजन हो रहा है, पहले मतलब लास्ट एक्सप्रेशन में वो m स्टार माइनस md है ना? हाँ देखो, यहाँ पे जब था न्यूक्लियस, इसका मास था एम स्टार, स्टार मीन्स इन एक्साइटेड स्टेट। जब डी के हो गया, इसका मास कितना हो गया, एमडी हो गया। तो क्यू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? रिएक्ट मास, रेस्ट मास ऑफ रिएक्टर माइनस रेस्ट मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। देखो बिफोर रिएक्शन कितना था मास, ये था। आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया, प्रोडक्ट का मास रेस्ट मास कितना है, एमडी। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है ना? तो उसी से आया है, ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज कि हाँ इधर काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ, तो प्रोडक्ट ER प्लस ED, यार नहीं, ये ई गामा है। सॉरी ई गामा, हाँ, तो फिर रिएक्टेंट का क्यों नहीं माइनस हुआ? रिएक्टेंट का वही तो पहले मैंने बोला था ना, ये रेस्ट पे है, ओह ओके मतलब सर, स्पीड 0 है, ओके सर। ठीक है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? कोई और डाउट? सबको समझ में आ रहा है क्लास में? यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर। सबको यस सर, यस सर। समझ में नहीं आया तो बताना कोई स्टेप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर सब पार्ट। हाँ, ये गामा प्लस ये गामा होल स्क्वायर बाय 2md c स्क्वायर ना? ई गामा प्लस ई गामा स्क्वायर डिवाइड बाई 2md सी स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो फिर आगे आपका, सपोज मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सपोज मान लो आपका बेरियम है 56, मास नंबर इज 137, गामा इमिशन हो रहा है, ठीक है, स्टार है 56 137, ओके। एंड इसका जो गामा ई गामा का ये है एनर्जी है वो गिवन है, ये है 662 की, ठीक है। आपको पूछा गया क्या है, ईडी कितना है? कर सकते हो इसको? यस सर। हाउ विल डू? तो पहले क्यों निकालें? क्या निकालोगे आप? ईडी क्या था आपका? एनर्जी बता। सी स्क्वायर। ईडी स्क्वायर बाई 2 एमडी, राइट, है ना? यस और ये कितना हो जाएगा आपका, ई गामा स्क्वायर बाई 2 एमडी, ओके। सो दिस इज ई गामा square. I'm substituting the value also here. So this will be 662 square divided by twice mass of D. So can we write like, how we can write? How can write? So it is almost like we can write 137 times mass of proton. Almost, right? Into C square. ठीक है सर हाँ, सॉरी सर हेयर डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस सेम है? हाँ, जस्ट क्या है, एक्साइटेड स्टेट का फर्क है। नहीं, मैं राफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ, अगर आपको मास गिवन नहीं है तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? 130। यस हाँ, सर। तो फिर यहाँ पे क्या मास कितना है प्रोटॉन का? प्रोटॉन का मास कितना है? 931.5 MeV के इक्वल आया। हाँ, कितना होता है इसका? 938 MeV। 9 अप्रोक्सीमेटली 938, राइट? यस नहीं, यस सर। एमई पर सी स्क्वायर होता है, यस सर। और सी स्क्वायर आपका ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 137 इंटू 938 मल्टीप्लाइड, है ना? फिर आपका यूनिट क्या आ गया, एमईवी में है, ऊपर यूनिट क्या है आपका, केवी में है, तो एमईवी से क्या करना पड़ेगा आपको, केवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? फिर आपका जो आपका एनर्जी आएगा इन टर्म्स ऑफ केवी में आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है, केवी स्क्वायर है, नीचे क्या किया 2 इंटू 137 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन की जगह पे क्या बैठा हो गया 938 MeV पर सी स्क्वायर, ऊपर एक आपका ऑलरेडी सी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा सी स्क्वायर, यूनिट क्या है MeV है,
आपको क्या है, ऊपर क्या है, के भी है, तो एमईवी से के भी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ईडी निकालना और मेरे को सेंड करना, ठीक है, कितना आ रहा है। सर के स्क्वायर तो सर सर एम स्क्वायर के बराबर हो जाता है ना, तो के से एम कट जाएगा। हाँ, के स्क्वायर तो एम स्क्वायर एम के बराबर हो जाता है ना सर, 10⁻6 हो जाएगा वो। कौन सा ये? नहीं सर, नहीं, जो ऊपर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, हाँ किलो तो सर 10⁻6 हो जाते थे, वो किलो स्क्वायर 10⁻6 हो गया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल नहीं हो गया वो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते। मेन टर्म यहाँ पे आपका इसका खेल है ना, ये आपका के वी स्क्वायर है और यहाँ पे एम ई भी है, तो आपका जो एनर्जी आएगा ना, देखो एनर्जी जो आएगा आपका इन द फॉर्म ऑफ के वी में लाना पड़ेगा, है ना, ठीक है ओके ना। सर, तो ठीक है आप सर। जो आप बोल रहे हो ना, वो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो दोनों को, तो ठीक है, इसको 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आ जाएगा, ये आपका 10�6 सर इलेक्ट्रॉन हाँ वोल्ट आ सर, मैं जाएगा, वही कह रहा हूँ ठीक सर, है मैं ना। वही कह रहा हूँ। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, स्मार्टली करना चाह रहा हूँ, एमईवी से जस्ट केवी में कन्वर्ट कर दो इजीली, केवी केवी कैंसिल कर दो, इजीली आपका आ जाएगा। तो ये सर 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हाँ आसपास आएगा, 1.7 के आसपास, हाँ चेक सर, ये 1.717 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड गुड, वेरी गुड, चलो वेरी सर गुड। हाँ सर मेरा स्मॉल डाउट है सर, एमपी इज मास ऑफ प्रोटॉन ना सर, हाँ, तो देखो सर मास ऑफ प्रोटॉन तो 56 है ना बैरियम का। प्रोटॉन का मास यस सर। कितना होता है, सर मास ऑफ, मतलब किसके प्रोटॉन का, मतलब बैरियम के ना सर। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 into 10⁻⁻27 kg. In terms यस। of energy, that will be approximately 938 point something MeV per c square. ठीक है, ओके हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इतना हो गया। Yes, sir. Okay, now the very important part of your exam point of view, that is selection rule. So suppose you have excited state and your ground state. So here spin is Ji, parity is, let us assume this is your pi, okay, and this nucleus is coming to ground state. Ground state has spin Jf, parity pi f, okay, and emitting photon, its angular momentum is L. So in gamma decay process, two things are conserved, that is angular momentum and parity. Okay, angular momentum and parity is conserved. So क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक है, 7:30 सर। 7:30 ना, जब हो जाएगा बता देना, ठीक है, 4 मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, यहाँ से कैन यू राइट लाइक जे आई इक्वल्स टू जे एफ Plus plus L. L. L is the angular momentum of your photon and let us assume this parity is pi gamma. तो यहाँ से L कितना मिल सकते बताओ, L का वैल्यू कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड Ji minus JF two, and Ji JF plus from AF. good. So it can vary from Ji minus Jf mod to Ji plus Jf, ओके, ठीक है। पैरिटी कंजर्व, इसका मतलब क्या है, पाई आई इक्वल्स टू पाई एफ इंटू पाई गामा, पैरिटी ऑफ इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट पाई एफ एंड पाई गामा, ठीक है, इतना Yes, क्लियर sir. है, ओके। Sir, here you have written Pi plus JF. हाँ Oh, sorry, Ji plus. Okay, sir. हाँ, ये आपका इनिशियल स्टेट का स्पिन पैरिटी, फाइनल स्टेट का स्पिन पैरिटी, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम फोटोन गामा का एल एंड
पी गामा स्पैरिटी। नाउ इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशन के कैसे डिनोट करता है, कितना इरेज कर सकते हो? क्यू से। हाँ, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशन। तो E इक्वल्स टू हाउ मच, बेसिकली -1⁻L, ठीक है, -1⁻L। अब देखो दो कंडीशन आ सकते हैं, एक आपका एल इवन हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर एल इवन है तो इसका पैरिटी कितना होगा गामा का, इवन इवन हो जाएगा, राइट। यस सर। इलेक्ट्रिक के लिए जो आपका ये है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल रेडिएशन के लिए जो पैरिटी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? टोटल पैरिटी सर, टोटल पैरिटी 1 ही होगी सर, हाँ, टोटल पैरिटी 1 ही होनी चाहिए सर। अभी बोलता हूँ, पहले बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक मल्टीपल रेडिएशन के लिए पाई गामा कितना होता है, -1⁻L, ठीक है। तो पाई गामा अगर एल इवन है, पाई गामा कितना है आपका, इवन है। हाँ, ये देखो आप जो बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं है, ये आपका इनिशियल स्टेट का पैरिटी अगर -1 है तो फाइनल स्टेट का भी -1 होना पड़ेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, तो अगर पाई सपोज मान लो आपका पाई गामा इवन है, मतलब जो इमिट हो रहा है गामा पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक के लिए क्या है, -1⁻L। तो अगर इवन है तो क्या क्या लिख सकता हूँ मैं कि phi I इक्वल्स टू phi f फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, +1 है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, जो इवन वाला पोलैरिटी है, मतलब जब जब आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का पैरिटी सेम है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का पैरिटी सेम है, तो जो आपका मल्टीपल रेडिएशन होगा ना, इलेक्ट्रिक मल्टीपल रेडिएशन, इलेक्ट्रिक मल्टीपल रेडिएशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन क्वाड्रोपोल, ऑक्टापोल, राइट। यस ठीक है, सर। यस सर, तो वहाँ पे एल का वैल्यू क्या अलाउड होगा, इवन 2, 4, 6। कब अलाउड होगा, जब आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का जो पैरिटी है सेम है, तब क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, ई के लिए इलेक्ट्रिक रेडिएशन के लिए एल का वैल्यू इवन अलाउड होगा, इतना ध्यान देना, ठीक है। दूसरा, अगर एल ऑड है सेम इलेक्ट्रिक के लिए, तो आपका पाई गामा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो यस सर, तो पाई आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -πf। तो जब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का जो पैरिटी है अगर ऑपोजिट हो गया, तो वहाँ पे क्या, कौन सा रेडिएशन मिलेगा मेरे को इलेक्ट्रिक के लिए, जो एल का वैल्यू 1, 3, 5 है ना, वो सब मिलेगा, समझ रहे हो। अभी प्रॉब्लम करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इतना समझ में आया, जो इलेक्ट्रिक रेडिएशन का जो पैरिटी लिखते हैं -1⁻L, अगर एल इवन हो गया तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का पैरिटी सेम। इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल फाइनल स्टेट का पैरिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक के कारण जो आपको रेडिएशन मिलेगा उसमें किसके लिए मिलेगा, एल का वैल्यू इवन के लिए मिलेगा। अगर एल का वैल्यू ऑड है तो फिर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक के लिए जो रेडिएशन है वो एल का वैल्यू ऑड के लिए मिलेगा। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट फॉर मैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन में क्या कैसे डिफाइन करते हैं? सर हाँ, सर ये इधर पैरिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है सर? मतलब एंगुलर मोमेंटम तो समझ में आ रहा है, बट हाँ, व्हाट इज द पैरिटी मींस व्हाट सर? पैरिटी इज स्पेशल इन्वर्सन, ठीक है। आपने पार्टिकल फिजिक्स क्लास नहीं किए थे, तो सपोज मान लो कोई आपका स्टेट है psi of x, psi of r, under parity special coordinate will get flipped. Discuss if you have doubt. आपने क्लास किया है पार्टिकल फिजिक्स नहीं? नो सर, पार्टिकल का ठीक नहीं है, उस था टाइम सर। कर लेंगे, है ना। अभी इतना समझो, बाकी पार्टिकल के टाइम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके सर। सर थोड़ा ब्लर भी हो रहा है सर। अच्छा, चलो टाइम हो गया शायद, है ना, कल करते हैं ना। यस सर, ओके, ओके सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।